हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ 23 जैन 2025 इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने आए हैं। हमने इससे पहले भी 3 पेपर डिस्कस किए। अब ये 4th पेपर है हमारा डिस्कशन में। सो लेट्स स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, match the following pairs. Here some alloys are given, which we have to connect with metals, respected metals actually. Now if you consider the first alloy, that is bronze, we know that the bronze is actually made up of copper and Sn, that is tin. Now if we consider brass, we know that brass, actually this is brass, bronze, this actually given in NCERT textbook. If we consider brass, that brass contain copper and zinc. Here it is copper and zinc. Now if we consider stainless steel actually contain iron, chromium and sometimes nickel also, and the remaining one is actually UK gold coin, which contains silver, copper, zinc and nickel, and therefore the answer is A answer. ब्रास और ब्रांज दोनों का अलॉय फॉर्मेशन टॉपिक जो है सॉल्यूशन क्वालिटेटिव का, ये ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, अलॉय फॉर्मेशन इन सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें दिया गया है. The second, 2 statements are given. For a particular shell, maximum number of orbitals is n square. This is true statement. For D subshell, number of orientation lies between minus L to plus L including 0. Yes, obviously. Not only for D subshell, it is for S, P also, F subshell also. Number of orientation lies between minus L to plus L. That is azimuthal quantum number with increment of +1. Both statements are correct actually. Then third, by using relation del G is equal to del H minus T del H, which of the following is incorrect for spontaneous reaction? For spontaneous reaction at a given temperature. Now, this actually we know the equation actually, this one. And if we consider the question, now see here, we know that the different conditions for us. We know that the stable, that is delta H, delta S and delta G. You know delta H is plus, delta S is also plus. Then reaction is spontaneous at high temperature. Spontaneous at high temperature only. If it is minus, then reaction is spontaneous at low temperature only. If delta H is positive and delta S is negative, then it is non-spontaneous always at all temperature. And if we consider delta H is negative while delta S is positive, then it is spontaneous at all temperature. Now let's check one by one. Delta H is greater, first option, delta H is greater than 0, that is plus. Delta S is greater than 0, that is plus. Now plus is spontaneous at high temperature actually. It may be at high temperature, but maybe. Now check second. This is delta H plus and delta S minus actually. B option. This plus and here it is minus. This is non-spontaneous at all temperature, is incorrect for spontaneous reaction. For spontaneous temperature. This is actually non-spontaneous and therefore the answer is B.
Then total number of isomers possible for aldehyde and ketones for C4H8O. C4H8O, that means 4 carbon atom. We have to draw aldehydes and ketones. Now how many isomers actually? Only 4 carbon atoms are there. Now if you consider starts from aldehyde 1, 2, 3, and that is CHO. Then 1, 2 methyl propanaldehyde. This is butyraldehyde, 2 compounds. And if you consider for ketone, it having only one option, that is butanone. Therefore only 3 isomers are there. One is butyraldehyde, second one is isobutyraldehyde, and third one is ethyl methyl ketone. Only 3. Now a mole concept question simply. 81 gram of aluminium reacts with 128 gram of oxygen. Calculate the amount of Al2O3 produced. Actually, first write down the basic reaction. Twice Al plus 3/2 O2. It gives you Al2O3 compound. Now here in a basic reaction standard form, if you consider standard form here contain aluminium 2 moles. Here it is 3/2 moles and alumina is 1 mole. Now 1 mole alumina having mass actually 102 gram per mole. Now 3/2 mole actually into multiplied by, if you multiply it by 32, it becomes 48 gram. Standard case. And here 2 moles multiplied by atomic mass of aluminum, that 27, it becomes 54 gram. Now from this we can say that 54 gram of aluminum required 48 gram, less than that, oxygen to produce 102 gram of alumina. Now what is given to you? Given values are what? Given that we have 81 gram of aluminium and 128 gram of oxygen. Now see here carefully, 54 gram of aluminium required 48 gram. Therefore 81 gram obviously required less than 81 gram of oxygen. But here 128 gram is much more quantity. Here that means 128 gram is a excess reactant, and therefore 81 is actually our limiting reactant. This 81 is actually our limiting reactant, and we know that product of any reaction is actually depends on limiting reactant only. Okay, now we have to find out the moles or a mass of Al2O3 produced. And therefore mass of Al2O3 produce is equal to, now see here, 81 gram gives 102 gram of alumina. Therefore cross multiply it with it. Here actually 54 gram is given actually. Here 54 gram, we have to take 54 gram. Therefore for 81 gram just prefer calculation, simple calculation. This becomes 2, here it becomes 3/2 into 102, that is 153 gram. Now next, pH of water is 7 at 25 degrees Celsius. Then pH of water at 80 degrees Celsius will be, we know that as temperature increases, Kw increases, and since Kw increases, H plus ion, which is equal to OH minus ion, increases. And if H plus and OH minus ion are increases, then pH obviously decreases. Then alpha helix and beta helix or beta plated sheet protein structure belongs to which category of structure? A simple one, secondary. Alpha helix and beta plated sheets are secondary structures of proteins actually.
The atomic number of the element with least melting point in group 14. Group 14 starts from carbon, then silicon, atomic number here 6, silicon atomic number 14, then germanium, whose atomic number is 32, then tin atomic number 50, and lead atomic number 82. Now, having at least melting point, we know the melting point actually, carbon melting point, we know that is 4373 Kelvin almost. Now silicon near about 1700, not exactly but almost. Germanium 1200 Kelvin, whereas Sn 500 Kelvin and Pb 600 Kelvin. The least value is actually least melting point. Least melting point found for tin, and tin having atomic number 50. Therefore, answer C. Now, which graph represents zero order reaction? Actually, zero order reaction representation given by various graphs. Now, if you consider basic equation of zero order, that is rate. If you consider rate here, rate is equal to k into a raised to 0, that is rate is constant. Rate is equal to constant. This is actually here r, whatever r is given here, this is not a rate actually, this is concentration. Here it is a concentration, not rate. Concentrations are given to you. Concentration. This is also concentration. Concentration versus time graphs are given. Now another equation, we know that another equation for zero order reaction, this one, another equation we know that is a t is equal to minus kt plus a0, minus kt plus a0. Now if we draw a graph of at, that is concentration at time t, this graph, this is concentration, that is at at time t. We have positive slope here, one axis a0 is a positive slope, sorry, positive intercept, and minus k is a slope actually. Therefore graph is having nature like this, the concentration versus time t. Now therefore answer C is correct, concentration versus time t. Simple one. Now next we have to perform ozonolysis. Simple. In ozonolysis, double bonds are broken down and oxygens are connected to there. Also simple, this is reductive ozonolysis actually. Remember this thing, zinc is present, therefore it is reductive ozonolysis. That means aldehyde may form. Aldehyde may form. This having a double bond here, here also double bond. Okay, it having CHO group, aldehyde group. Here also CHO group. Simple one. This is your final product. Now next, chlorobenzene is given when reacts with NaOH at high temperature and pressure, followed by H3O plus. Simple, we know that chlorobenzene when reacts with NaOH, it's sodium phenoxide. That sodium phenoxide on further treatment with H3O plus gives phenol. This will give you phenol. This is Dow's process. Dow's process. Phenol on treatment with K2Cr2O7, that is oxidation. It gives quinone. It gives quinone compound. Now next question, the order of relative rate of solvolysis for following compound. Remember one thing, solvolysis
actually indicate stability. Stability directly proportional to stability of intermediate. More stable the intermediate, more will be solubilisis effect. Now we consider different aspects of this. Now see here, this Br attached to a tertiary carbon. This is 3-degree carbon actually, 3-degree carbon, which is stabilized by plus I effect. This is plus tertiary. Here Br attached to secondary carbon. Here Br attached to secondary carbon. Here Br attached to secondary carbon. This is here tertiary only. Now see here is a plus I effect only. If you consider here plus I effect as well as R effect is also there for from benzening. In next case, 2 times plus R effect is there. Benzyl carbocation, double benzyl carbocation. This is simple plus I effect. And we know that in stability factors, resonance effect is much more stable than that of the hyperconjugation and resonance effect. Now, therefore, the most stable solubilisis, most stable intermediate given by C option, that is solubilisis is also relative rate of solubilisis higher in option C. Let's see here, so first number, that is here first number actually. This will give you first number A. Then B plus R effect, second number. Then A tertiary group, and here secondary fourth one, and therefore answer is A. Which of the following complex has D4 configuration? D4 configuration. Here Fe is in its +3 oxidation state. Here F6, that is -6, having -3 overall charge on the complex. Therefore manganese also 3, showing +3. Then if you consider cobalt, here cobalt also showing +3, and here in this case cobalt showing -4, -2 can cancel the +2. Now we know that Fe3 plus having configuration actually 3D5 configuration. If you consider Mn3 plus configuration, Mn3 plus is 3D4. Then if we consider CO3 plus configuration, it is 3D6 configuration, and here it is for cobalt 2 plus 3D7 configuration is there. Now which of the following complex has D4 configuration? They ask us. The D4 configuration we found in manganese, that is D4 configuration, 3D4, Fe having 3D5, cobalt having 3D6 and 3D7 configuration. Simple. Now consider the inert values of given half cell. Silver 0.8, for zinc it is -0.76, for copper it is 0.34, for manganese it is -2.36. Then which of the following will have most negative value, del G value? Actually we know the formula, del G naught is equal to -NF inert cell, more negative. Therefore del G naught directly proportional to inert cell, minus del G naught. Minus del G naught is equal to inert cell. More the inert cell value, more negative will be del G naught value. Higher the inert value, higher the inert cell, more negative will be del G naught. Okay. Now we have to find out cells one by one. Now let's consider here zinc undergo oxidation, the reduction potential is given. If you consider opposite potential, that is plus 0.76, plus copper undergo reduction, copper value having 0.34 value, plus 0.34, which becomes here, if you consider this both values, zinc and copper, 0.76, that is it becomes 1.1 volt. The magnesium, we consider magnesium having value
For reduction it is minus 2.36. Here for oxidation it gives plus 2.36 plus 0.8, which is equal to 3.16. Now for Mg we know that here 2.36 plus for zinc 0.76 is equal to 3.12. Now copper, it given minus 0.34, changing the value, plus 0.8, which is equal to 0.46. The maximum value found in this case 3.16. Therefore the answer is there. Maximum inert value 3.16, and their maximum inert value gives higher del G naught value, negative value. Now next question. A compound X consume 2 moles. Compound X consume 2 moles of H2. 2 moles of H2, that means 2 double bonds, 2 pi bonds. And when X is added to KMnO4, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको. 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 2 डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं पे. चलो अरेंज करेंगे. हमें पता है ओजोनोलिसिस रिएक्शन में, क्या होता है, ऑक्सीजन बाद में ऐड होता है, ऑक्सीजन्स बाद में ऐड होते हैं, ये सारे ऑक्सीजन्स है. तो कहाँ पे ऑक्सीजन हम हाईलाइट कर देंगे, ये वाला ऑक्सीजन बाद में आएंगे, ये वाले ऑक्सीजन बाद में आए, ये वाले ऑक्सीजन बाद में आए, ये वाले ऑक्सीजन बाद में आए. ओरिजिनल कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन. इफ यू जॉइन दिस फ्रैगमेंट वी हैव मॉलिक्यूल लाइक दिस CH3, C हियर CH3. ऑक्सीजन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा. अब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे दूसरा एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये वाला C डबल बॉन्ड हो करके, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे CH3 क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है. यहाँ पे होगा ये वाला CH2, इसके बाद ये वाला CH2, और इसके बाद ये यहाँ पे होगा CH. तो ये CH2 यहाँ पे आ गया, ये CH2 यहाँ पे, ये एक मिनट, ये CH2 यहाँ पे आ गया, CH3C, CH2, then CH डबल बॉन्ड CH, एंड हियर CH3. चलो कार्बन काउंट कर लेते हैं. यहाँ पे कितने कार्बन है, अब इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 कार्बन तो हो गए. अब जैसे हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमको ऑक्सीजन मिल जाएंगे. ये ओजोनोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड O भी लगेगा, H भी लगेगा, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन लगेगा और एक OH भी लगेगा, OH. यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी लगेगा और एक OH भी लगेगा. हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका. अब हमें पूछा है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं. सिग्मा बॉन्ड हमें बताना है. सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे. अभी हाइड्रोजन की जितनी भी हाइड्रोजन है काउंट कर लो पहले, जितने हाइड्रोजन. यहाँ पे हुए 3 हाइड्रोजन, 3 and 3 6, 3 9, 10 11, 12 13, 14 15, 15 और 3 18. अब हाइड्रोजन तो काउंट कर लिया, हाइड्रोजन जितने होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे 18. और कार्बन कार्बन बॉन्ड चेक करना सिग्मा बॉन्ड. अब ये हो गया 19 वाला बॉन्ड, ये हो गया 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 और ये वाला 27. तो यहाँ पे टोटल 27 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड 2 पाई बॉन्ड्स है. पाई बॉन्ड्स तो हमें पता ही थे, उन्होंने बता दिया कि 2 मोल्स H2 लगने वाला है कंपाउंड को अगर वो कंज्यूम करता है हाइड्रोजन तो. Now next, when a non-volatile solute is added to volatile solvent, the vapor pressure of solvent decreases by 10 mm of Hg. Okay, here we know the equation actually. Del P is equal to P naught XA. Now here A solute is added to volatile solvent. The vapor pressure of solvent decreases by 10 mg. That means del P is given, this is 10. Here P naught we have to calculate, and mole fraction of solute is also given, that is 0.2. Now therefore, if we can consider this, we have the P naught value which is equal to 50 mm. This is P naught value. Okay, pure vapor pressure. Now mole
second, if the second solute is added to the same solution, okay, second solute B is added to the same solution, the vapor pressure of solution decreases by 20 mmHg. अब देखो यहाँ पे ये जो वर्डिंग बताया ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस 20 mmHg, यहाँ पे ध्यान देना है आपको. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 20. अब देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये प्योर वेपर प्रेशर था हमारा, ये वाला जो है डेल पी नॉट, ये प्योर वेपर प्रेशर है. अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था, इसके बाद यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना था सॉल्यूशन का. यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P ये जो था ये लोअर हो चुका था. मतलब ये कैसे निकालोगे आप, P को कैसे निकालोगे आप, डेल P सब ट्रैक करो, P नॉट में से डेल P सब ट्रैक करना है आपको. अब P नॉट आपका 50 आ गया, 10 mmHg डिक्रीज हुआ था, तो इसका मतलब ये 40 हो गया. अब इन्होंने ये वाली कंडीशन यहाँ पे बता दी कि ये वेपर प्रेशर जो है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है 20 mmHg से. अब वेपर प्रेशर 20 mmHg से सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है. अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर 20 mmHg से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 20 mm, देयरफॉर इट बिकम्स 20 mm. अब 40 में से 20 डिक्रीज हो रहा है तो 20 mm आएगा. अब 20 mm आएगा है फाइनल P टोटल, ये फाइनल P है, ये P है आपका फाइनल P 20 mmHg. यहाँ पे आ गया ये वाला P. अब दूसरा इक्वेशन आपको इस तरह से बनाना है कि हमें पता है डेल P कितना हो, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल P कितना है. इस वाले केस में यहाँ पे आपका डेल P बन जाएगा एक्चुअल P नॉट में से आपको P नॉट में से आपको P नॉट में से P नॉट सब्ट्रैक्ट करना है आपको. P में से P नॉट सब्ट्रैक्ट करना, P नॉट में से P सब्ट्रैक्ट, उल्टा हो रहा है. P नॉट में से बराबर था पहले ही, एक मिनट, P नॉट में से आपको P फाइनल सब्ट्रैक्ट करना है. ये हो गया P नॉट. तो P नॉट वैल्यू हमारे पास थी 50, ओरिजिनल वैल्यू है. इसमें से 20, ये P 20 हटा दिया तो डेल P हो गया 30, डेल P 30 आ गया. अब हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे फाइनल डेल P के लिए. अब डेल P इज इक्वल टू P नॉट इंटू XA प्लस XB. दो सोल्यूट, अलग अलग सोल्यूट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं. अब डेल P तो हमें मिल गया 30, डेल P तो मिल गया 30, P नॉट भी पता है हमको 50. ये हो गया XA प्लस XB, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया. अब यहाँ पे क्या आएगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू हो गया 0.6. ये टोटल हो गया 0.6 आपका, XA और XB मिला के हो गया 0.6. अब यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा आपका 0.4. वो तो पूछा नहीं हम लोगों को, हमें पूछा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सोल्यूट इन द फाइनल सोल्यूशन. अब XA तो पता था हमें, XA 0.2 था. सब्सटीट्यूट, अब अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट XA 0.2, देयरफॉर XB इक्वल टू 0.6 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.4. 0.4 इज आंसर. ठीक है. Now 0.01 mole of an organic compound, that is hydrocarbon gives 1.76 gram of CO2 and 0.9 gram of H2 on complete combustion. Find out the chemical formula of the compound. Okay, just consider a general reaction in which hydrocarbon, that is hydrocarbon CXHY, when undergo oxidation, excess of air, this will gives you X times CO2 plus Y by 2 times H2O. Now if you consider standard case, in standard case here it is 1 mole, here it is X mole, here it is Y by 2 mole.
नाउ व्हाट इज गिवन टू यू एक्चुअली, क्या दिया गया आपको, गिवन दिया गया आपको ये दिया 0.01 मोल, 0.01 मोल और आपको दिया गया CO2, ये दिया गया 1.76 ग्राम, 1.76 ग्राम और ये दिया 0.9 ग्राम। देयरफॉर अब 0.01 मोल है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 मोल, 1 ये आ जाएगा यहाँ पे 1 मोल, 100 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आ जाएगा 176 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 90 ग्राम। ओके, नाउ आपको पूछा है फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो हमें इसके मोल निकालने, ये एक्चुअली मास मिल गया हमें, मोल्स कैसे निकालोगे, तो मोल्स निकालने के लिए 176 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी मोल्स, यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 18 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे मोल्स इसके, तो ये मोल तो आगे 5, यहाँ पे आप अगर डिवाइड करोगे तो ये मोल आ जाएंगे 4 मोल। अब इसके हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं तो x यहाँ पे 4 मोल है, 4 मोल मतलब क्या, x मोल हो गया, 4 मोल माने x मोल, तो इसका मतलब फार्मूला जो है, फार्मूला आपका क्या आएगा, फार्मूला आएगा C4, ये कन्फर्म है, और y/2 की वैल्यू 5 है, इसका मतलब y की वैल्यू, y/2 अगर 5 है तो y की वैल्यू 10 होगी ऑब्वियसली, तो h इज 10, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, मोल कंसेप्ट बहुत कनेक्ट किया है बहुत जगह पे। नाउ आपको एक कंपाउंड दिया गया है एनिलीन, एक NH2 प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, जिसको पैरा पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप ज्वाइन किया है। अब सिंपल यहाँ पे NaNO2 अगर HCl की रिएक्शन है, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन होती है तो डायजोटाइजेशन होगा, सिंपल है। हम चेक करते पहले, ये सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ ETO, यहाँ पे NH2 डाल दिया, NH2, यहाँ पे नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है डायजोटाइजेशन, HNO2 का इन सिटू बनता है NaNO2 और HCl से, ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है। अब आपको मिलेगा ETO, ये यहाँ पे N2 प्लस और X माइनस होगा। अब इसकी रिएक्शन जब आप फिनॉल के साथ करोगे, फिनॉल के साथ, अब pH आपका होगा लगभग 8, दैट इज़ अल्कलाइन मीडियम सोल्यूशन। तो अल्कलाइन मीडियम में जब फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पे करोगे तो डायजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, डायजो कपलिंग में आपको ETO, ये बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N मिल जाएगा, यहाँ पे ये एक रिंग लग जाएगी, यहाँ पे PH OH होगा, ये आपको ऑरेंज डाई मिलेगा, ऑरेंज कलर का डाई। इस ऑरेंज कलर के डाई को अगर आप रिएक्ट करते हो नेक्स्ट NaOH के साथ, इसकी रिएक्शन आप जब NaOH के साथ करोगे तो ये फिनॉलिक हाइड्रोजन, जो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। चलो देखते हैं हम क्या होगा, यहाँ पे ETO, देन बेंजीन रिंग, देन N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ONA आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन आपको करनी है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, CH3 CH2 Br, ये होगी विलियमसन्स सिंथेसिस। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये ET मतलब CH3 CH2 था, ऑक्सीजन, ये बेंजीन रिंग मिल गया आपको, ये N डबल बॉन्ड N मिल गया। अब इसको आपको लगाना है, ये वाली बेंजीन रिंग यहाँ पे लग जाएगी, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे इस पोजीशन पे O की जगह पे आपको लगेगा OCH2 CH3। तो आपको पूछा गया है नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन फाइनल C प्रोडक्ट। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन कौन कौन से, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज है, ये दोनों sp हाइब्रिडाइज है, तो टोटल कार्बन कितने आए, 4 कार्बन टोटल आए sp हाइब्रिडाइज के।
ए कंपाउंड दिया गया है, हमको ABC आइडेंटिफाई करना है, हमको ABC आइडेंटिफाई करना है। अब किसकी रिएक्शन आप HNO3 से करोगे तब आपको PbNO3 मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड है ये होगा PbCl2। PbCl2 को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपको मिलेगा PbNO3 नाइट्रेट। अब इसको आप H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो ये NO3 रिप्लेस हो जाएगा SO4 से, जो कि स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे मिलेगा आपको PbSO4, और PbSO4 को अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड सोल्यूशन में जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा लीड एसीटेट, और लीड एसिटेट को क्रोमेट से रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा लीड क्रोमेट। तो आंसर बी हो गया इसका। देन नेक्स्ट है मैच द पेयर। मैच द पेयर, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आप ब्रेक करोगे, ये यहाँ पे कुछ लाइंस गायब हो गई है, ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक जगह पे H है तो यहाँ पे COH बन जाएगा, ये करेक्ट है। ये COH है यहाँ पे, ये यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये भी COH करेक्ट है। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट ये वाला करेक्ट है, ये कनेक्टेड है। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में 2 डबल बॉन्ड एक ही जगह पे है, 2 डबल बॉन्ड एक ही जगह पे है, तो ये कहाँ कनेक्ट होगा? डबल बॉन्ड सिंपल 6 पोजीशन, ये एक डबल बॉन्ड की 2 डबल बॉन्ड, यहाँ गलती से शायद एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा निकाल दिया है, गलती से दिखा दिया है, क्या हो गया? एक मिनट, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं दिखाया, कुछ तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई शायद। ओजोन लिसिस, ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कुछ तो नहीं, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट करने हैं आपको। अगर इस बात आप यहाँ पे चेक करोगे तो COH ये वाला यहाँ पे मैच हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे COH मिलेगा, ये लाइन बराबर है, ये लाइन बराबर, ये लाइन बराबर, ये लाइन बराबर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे COH, यहाँ पे ये इसको कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कितना मिलेगा? एक ग्रुप यहाँ पे टूट गया, ब्रेक हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पे था, ये शायद यहाँ पर नहीं होगा। एक मिनट, ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे होगा इस तरह से। यहाँ पे अगर होता है तो ये वाला ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे COH आएगा, ये COH आएगा। सिंपल, ये एक्चुअली आमने सामने ही प्रोडक्ट है सारे के सारे। A का फर्स्ट आ जाएगा, B का सेकंड आ जाएगा, C का थर्ड और D का फोर्थ आ जाएगा। सामने सामने प्रोडक्ट है, मैच द फॉलोइंग, सिंपल वन, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक मास which is linear statement. Graph obtains square root of nu versus atomic number is linear. Actually, if we study modern periodic table, NCERT chapter modern periodic table, in modern periodic table actually 3.3 passage, they are given actual statement is given that del nu versus z, that is atomic number gives a straight line. This is actually statement of NCERT, straight line, not atomic mass, only atomic number. Atomic number have great significance while studying periodic table. This is actually statement. The first statement is absolutely correct and the second statement is wrong. The first statement is correct. Atomic, sorry, उल्टा हो गया, ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे एटॉमिक नंबर है। पहला वाला रॉन्ग है, पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, नीचे वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दबाजी में उल्टा पढ़ लिया। फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी।
actually given in NCERT textbook. This is a question from NCERT, direct question from NCERT. Where what actually mu? What is mu actually? There mu is equal to frequency. Mu is equal to frequency. This is also given in NCERT. Frequency of X-ray emitted. X-ray emitted. This is also given in NCERT. ठीक है. ओके गाइज, थैंक यू. जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे उतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है. क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऐसे ही थे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, अब मिलेंगे अगले डिस्कशन में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.